Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम उदयन। धन्यवाद सोनू, थैंक यू राजेश। और अब हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं राजेश लेख। Equity benchmarks climb more than 1%, supported by gains in realty, telecom, IT and tech sector stocks. Rupee strengthened 38 paise against the US dollar, and global indices logged gains amid prospects of a COVID-19 vaccine fueling global economic recovery. रियल्टी, टेलीकॉम, आईटी और टेक क्षेत्रों में तेजी के बल पर शेयर बाजार 1% से अधिक के उछाल में। रुपया डॉलर के मुकाबले 38 पैसे मजबूत रहा और कोविड-19 वैक्सीन से वैश्विक आर्थिक वृद्धि मजबूत रहने की संभावना के बीच वैश्विक बाजारों में तेजी। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांक आज 1% से अधिक के उछाल में रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.15% की वृद्धि से 506 अंकों का उछाल दर्ज करता हुआ 44,655 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.08% की भारी मजबूती से 140 अंक बढ़कर 13,109 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन सेंसेक्स से कम अच्छा था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.94% की वृद्धि पर बंद हुआ और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.82% की बढ़त दर्ज हुई। Key domestic indices today climbed more than 1% amid positive global cues. Sensex jumped 506 points or 1.15% to settle at 44,655. The NSE Nifty 50 index also surged 140 points or 1.08% to settle at 13,109. The broader market at BSE underperformed as the BSE mid-cap index rose 0.94%, while the BSE small-cap index appreciated 0.82%. In the Sensex pack, shares of 20 companies climbed while 10 logged losses. Sun Pharma was the top gainer as it climbed 5.5%, followed by IndusInd Bank, which gained 4.4%. Tech Mahindra climbed 3.9%, while ONGC gained 3.8%. Bharti Airtel rose 3.5% and Infosys added 3.3%. On the other hand, Kotak Bank declined 2.6%, HCL Tech fell 2.4%, and ONGC slipped 2.1%. Axis Bank and TCS slipped 1.5%. In sectoral indices, 18 out of 19 sectors climbed except consumer durables, which fell marginally by around 0.2%. The top gainer, realty sector, climbed 3.5% and telecom surged 2.5%. IT and tech sectors gained 2.4% and oil and gas rose 2.1%. The overall breadth at the BSE trade was positive as shares of 1,922 companies gained, 976 declined and 174 remained unchanged. Udayan, markets started December trading on a strong footing, raising benchmark to a fresh high due to good GDP data. And markets across the globe made a positive start to the month
December 1 today, expecting an extension of November's record-breaking gains along with strong hopes of a COVID vaccine. Do you think this optimism can sustain in near term with a shift towards mid and small caps led by a log effect? Well, Rajesh, it seems that for a little while, say for a week or two, this kind of sentiment is likely to remain because we are getting the positive vibes from all the developments around vaccines. As you would be knowing that somewhere around 12th or 13th of December, which is roughly about 2 weeks from now, emergency approvals will come about in the United States. That's what a lot of the people are expecting. And that, while that will on the ground may not change things enormously, whether in the US or otherwise, but that will have a signaling sort of an effect. Similarly, in the next 10, 12 days, you'll find similar developments happening in the UK as well. So what that is going to do is going to send a signal that this pandemic, this distress that the whole world has been going through, is the reverse countdown is beginning. It's obviously going to be a slow mitigation that's going to happen. But because of that signaling and that expectation, that relief, you will find, some of the things that you talked about. Also, Rajesh, it's worth pointing out that China is Chinese data, economic data, manufacturing data is showing enormous promise, and they're growing really fast, and they're right ahead of the pre-COVID levels. So it's as if COVID didn't happen in China. It's almost coming to that point. So obviously, it's in terms of numbers, in terms of it's not distributed well. There will be people who are impacted out there, as well as that's the case in other countries as well. But that China data, information from China, that is also going to boost sentiments. You would have seen the commodity prices. China is a big buyer of commodities. Those prices have gone up. उदयन, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर Q2 जो Q2 है, सितंबर क्वार्टर, उसके जीडीपी फिगर्स आए और हालांकि अभी भारत में तो कॉन्ट्रैक्शन ही है, लेकिन ये जो सबके एस्टिमेट्स थे इंक्लूडिंग आरबीआई उससे बेहतर आए, 7.5% का ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ. सो अब आपको क्या लगता है कि क्या ये फिगर्स भी जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सीक्वेंशियली जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है जीडीपी ग्रोथ में, क्या ये भी बाजार के सेंटिमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है? और जो ट्रिगर कल आरबीआई की पॉलिसी जो शुरू होने वाली है, उससे भी आपको क्या आशाएं हैं इन जीडीपी के फिगर्स को बैकड्रॉप में रखते हुए? सोनू, ये जीडीपी के फिगर जब निकले उसके बाद आज शायद इफ आई मे स्टैंड करेक्टेड, बट मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये पहला दिन था जब मार्केट ने उस पर रिएक्ट करने का टाइम, वो छुट्टी थी बीच में, वीकेंड था, तो वो उसने रिएक्ट किया. अगर आप जीडीपी के फिगर्स देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग रहा है. वो एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव टेरिटरी, 0.6% के आसपास कुछ फिगर निकला है, जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. और वही एक्सप्लेन करता है कि आपके जो कॉन्ट्रैक्शन कम जिसके बारे में जिक्र किया, वो इसको एक्सप्लेन करता है. तो ये इससे अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग बराबर चलती है तो ये सेंटिमेंट रहेगा, और उसका रिफ्लेक्शन आपको ऑटो सेक्टर से दिख रहा है, जहां पे सेल्स बहुत अच्छा है. मार्केट से एक्सपेक्ट कर रही है मारुति, दूसरे कंपनीज जो हैं सभी अच्छा करेंगे, 2 व्हीलर्स अच्छा करेंगी, तो वहां पे अच्छे खबर आई है. तो ये अगर बरकरार रहता है 1 या 2 महीना, तो फिर वो ट्रेंड सॉर्ट ऑफ बन जाएगा. और ये फिगर आप जीएसटी कलेक्शन से भी देख रहे हैं. तो ये कुछ चीजें हैं जो बरकरार रहेंगी, पर फिर भी हम कॉन्ट्रैक्शनरी मोड में इसलिए रहेंगे सोनू, क्योंकि सर्विसेज का जो आंकड़ा आप जीडीपी के फिगर में देखेंगे वो अभी भी अच्छे खासे नेगेटिव टेरिटरी में. तो जैसे कि हम जानते हैं सर्विसेज हमारे जीडीपी के 50% से भी ज्यादा अकाउंट करता है, इसलिए साल का एंड हम नेगेटिव टेरिटरी में जरूर करेंगे. पर मैन्युफैक्चरिंग में अगर बेहतर करते चले जाते हैं तो ये री-रेटिंग, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, ये सब चलता रहेगा. Okay, then you very rightly said we are expecting auto sales data tomorrow, and that would be tracked keenly by the markets. In the meantime, today the IHS Market India Manufacturing Purchasing Managers Index fell to a 3-month low
of 56.3 in November from an over 12-year high of 58.9 October. And as we all know, a reading above 50 on the index indicates expansion. So all the three broad areas of manufacturing industry recorded expansion in this, with growth led by consumer goods, which was the only sector to see a stronger rate of increase. And this is what the survey is pointing towards. What is your reaction to that? Absolutely, Rajesh. While one or two reports that I came across mentioned that it's some kind of moderation that has happened, but see, from 59, nothing was really happening, and we hit our figure of 59. From there, we are in the region of over 56. That's really high, Rajesh. And so the point is, we would have to start being alert if it drops some more points and goes closer to 50, as you mentioned. 50 plus is expansion. But there was a lot of pent-up demand that it's worth pointing out. There's a lot of replacement that had to happen. There's a lot of stocking that had to happen. The supply chains are now moving. They seem to be moving. Otherwise, you cannot clock these figures. So in terms of manufacturing, it seems to be, as we had discussed in the past in these programs as well, that the agriculture would probably go almost unscathed, followed by manufacturing, and services possibly would be the last. And unfortunately, till the services gets back into a normal sort of regimen, we won't be able to clock the kind of numbers that we are capable of and what we want to. उदिन, आरबीआई की पॉलिसी जो कल शुरू होने वाली है, आरबीआई की मीटिंग, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट आएगी, इस पॉलिसी से क्या आपको आशाएं हैं? क्या आपको लगता है इसके प्रमुख आउटकम्स हो सकते हैं और बाजार के लिए कितना सिग्निफिकेंट है? सोनू, इसमें बाजार में क्लियरली कोई रेट में कमी या इंक्रीज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सब लोग आरबीआई की कमेंट्री के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि लिक्विडिटी, तरलता, जो मनी की जो मूवमेंट है, लिक्विडिटी, उस पे, और मुद्रास्फीति के बारे में आरबीआई क्या कह रही है, क्योंकि वहीं से आपके जो मान लीजिए डेट इन्वेस्टमेंट होगा, जो पूरा जो रेंज ऑफ एक्टिविटीज है, प्लानिंग है, वो वहां से आएगी। तो आरबीआई का क्या सेंस है अब लिक्विडिटी के बारे में और मुद्रास्फीति के बारे में, इसी के बारे में लोगों का ध्यान रहेगा। बहुत सरप्राइजिंग होगा अगर आरबीआई कोई रेट में चेंज करता है तो। आरबीआई से ही जुड़ा एक मेरा प्रश्न था कि अभी हमारी इकोनॉमी में नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं। इनफैक्ट 2008 में जब यूएस क्राइसिस हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो वेस्ट में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको लगभग जीरो पे ले आए थे, बहुत कम कर दिया था टू एनकरेज स्पेंडिंग रादर देन सेविंग। सो अभी आपको लगता है कि हमारी इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है जो स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में या स्पेंडिंग की तरफ शायद कुछ एक बूस्ट दे सकता है, इंस्टेड ऑफ मे बी पुटिंग द मनी इन द बैंक या एफडीज में? नहीं सोनू, मुझे ऐसा नहीं लगता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि लोगों, आप और हम जैसे लोग हैं जो थोड़े से फाइनेंशियली लिटरेट हैं भी, हम सब वी सफर फ्रॉम समथिंग विच इज कॉल्ड मनी इल्यूजन। जॉन मेनार्ड कीन्स, मशहूर अर्थशास्त्री, ने कहा था मनी इल्यूजन। हम लोग इन्फ्लेशन को फैक्टर नहीं करते हैं जब हम बातचीत करते हैं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स के बारे में नहीं करते, वो तो नहीं तो फिर कई जगह में हम निवेश ही नहीं करते, ठीक है, तो वो शायद ना हो। दूसरी बात है कि आपके एक चीज और बताने के लायक है, ऑल्दो हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो रहा है मंथ ऑन मंथ, पर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी कई जगह में छटनी हो रही है, जॉब लॉसेस अभी भी हो रही है, क्योंकि एडजस्टमेंट हो रहा है, उसमें अडेप्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो जो लोग जॉब्स लूज कर रहे हैं उनको री एम्प्लॉय होना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा जहां पर फ्रेश जॉब्स क्रिएट होंगे। तो ये जब तक ये रीडिप्लॉयमेंट ठीक से नहीं हो जाता है तो आप एक ऑल ब्रॉड बेस्ड जो टेंडेंसी है या एक्टिविटी है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, बात कर रहे थे, उस तरफ मुझे नहीं लगता हम जा पाएंगे। पहले ये पूरा एडजस्टमेंट ठीक ठाक होना पड़ेगा, तब जाके बात कुछ आगे बढ़ पाएगी। तो कितना समय आपको लगता है कि लगेगा वापस नॉर्मल सिचुएशन आने में, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, प्रोडक्शन? देखिए काफी कुछ तो एकदम से बंद था, इसलिए अनएम्प्लॉयड
काइंड ऑफ स्टेटस में थे, मतलब इनकम नहीं आ रही थी, कंपनियों ने क्या किया, अभी हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं, तो वो काफी हद तक सुधार हुआ है। पर देखिए सोनू, आप एयरलाइंस को देखिए, एंटरटेनमेंट को देखिए, जहां पे गैदरिंग्स होती हैं, वो सारी सर्विसेज को देखिए, वो सब अभी भी कहीं मतलब बहुत कम कैपेसिटी में रन कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स को देखिए, तो जहां पे अभी हम गैदरिंग के रेस्ट्रिक्शन है, ये जब तक ये वापस नहीं आता है, जो कि हम मान के चल सकते हैं अगला 5-6 महीने में धीरे धीरे करके ओपन अप होगा। अब देखिए हमारा यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल भी तो नहीं हो रहा, इंटरनल ट्रैवल में भी इश्यूज है, तो टूरिज्म से जुड़ी हुई बातें, इंटरनेशनल ट्रैवल से जुड़ी हुई जो एम्प्लॉयमेंट होती है, सब इम्पैक्टेड है। तो वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे कंट्रोल में आएगा, जैसे जैसे हम ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन और दूसरे रिस्ट्रिक्शन कम होते चले जाएंगे, और वैक्सीन या दूसरे जो डिटेक्शन, काफी फोकस वैक्सीन में रह रहा है, पर मान लीजिए अच्छे टेस्ट आ जाते हैं जिसमें फौरन आप होम टेस्ट करके डिटेक्ट कर सकते हैं, इन सब चीजों में ये फर्क आ सकता है, और ये सब पाइपलाइन में है। तो ये सब जैसे जैसे आएगा आप पाएंगे कि हम जितना, कई लोग बहुत ही डार्क पिक्चर कर रहे थे उससे बेहतर करेंगे, कुछ लोगों को लगता है कि परसों ही ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी नहीं होगा, पर ये धीरे धीरे आएगा, और हम जो उम्मीद कर रहे हैं औसतन उससे बेहतर आएगा, जो कि हमने इस क्वार्टर में देखा है। We'll be taking a short break at this point of time and be back with you very soon. 3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. We welcome you back, and Udayan, to you as well. We were discussing about the Indian markets, and one question that we did ask you before, I'm rephrasing that, and that pertains to the shift towards mid and small caps. Today the mid cap index rose 0.94%, the small cap index appreciated 0.82%. Where do you see this going, and how optimistic are you about sustaining in near term this shift towards mid and small caps? Well, that's an interesting question, Rajesh. Typically what happens is, it's a familiar sequence. When people start buying, they start from the top, which is the large caps, and then they move on to mid caps because they're riskier, high risk, and there are other issues. Then they move on to small caps. So when you want to get bargains, you'll have to move, to the smaller, progressively to smaller capitalizations, because you're running out of candidates for investments. So, and vice versa is also true. When the market starts correcting, the small caps get bashed up first. But there's a lot of interest of institutional investors, Rajesh, and you would see a lot of action happening, whether it's people going in directly or indirectly. But it's worth pointing out is right now the earnings scene is still nowhere near what it should be. So if somebody is actually going out there, that shouldn't be the first port of call. You should have done the other things you have done, and then you go there, whether you're going there directly or indirectly. And at this kind of level, which there is, and of course, it's worth pointing out that the earnings hasn't dramatically. There's a rebound. It's not as if it has gone above the COVID levels. You're recovering. So at this phase, maybe it's running a little ahead, I would say. But the interest is going to be there, Rajiv. There's no doubt about it, because there's going to be a lot of optimism, and maybe there would be a little bit of a correction on and off, and then again a surge again. So all that is going to keep happening, and it lot also depends, Rajesh, on the kind of the interest also depends on the kind of policies United States, the new administration has, because that of course they have the biggest storehouse of capital. So if there is encouragement out there, there's a lot of government spending out there, then that boosts the whole sentiment across the world, and it will also help us as well. इनफैक्ट उदयन, बात हो रही है निवेश की शेयर बाजार में। सो एफपीआई फ्लोज जो है, जो विदेशी निवेश है, वो नवंबर में रिकॉर्ड स्तर का हुआ है भारतीय बाजार में, जिसके बल पर हमने 11.5% का उछाल भी देखा है नवंबर में। 25 नवंबर को हमने जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसको ऑल टाइम हाईज पर पहुंचते हुए भी देखा है। सो इस पर हम आपकी टिप्पणी जरूर चाहेंगे। उससे पहले हम बता दें कि क्या आंकड़े हैं।
भारतीय विकास में सुधार जारी है और ये संकेत एफपीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, एफटीआई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में निवेश के रुख से मिले हैं। ये रुख भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और स्थायित्व में निवेशकों के विश्वास को दर्शाते हैं। वित्त मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि पिछले 2 महीनों अक्टूबर और नवंबर 2020 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के भारत में प्रवाह में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। ये प्रमुख रूप से शेयर बाजार में निवेश के रूप में आई और भारत ने एक महीने में अब तक का उच्चतम एफपीआई निवेश हुआ। पिछले महीने की 28 तारीख तक एफपीआई का भारतीय बाजार में कुल निवेश 62,782 करोड़ रुपए था। इनमें से इक्विटी बाजार में निवेश की मात्रा 60,358 करोड़ रुपए थी और ऋण बाजार और हाइब्रिड बाजार में निवेश 2,424 करोड़ रुपए का था। सो जो विदेशी निवेश है वो बहुत एक विश्वास दर्शा रहे हैं भारतीय बाजार में। आपकी क्या सलाह होगी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ब्रॉडली? देखिए, अगर लोग भेड़ चाल में जाएंगे एज द मार्केट जैसे क्लाइम होता है तो फिर शायद दिल बी वर्स ऑफ। उनको शायद ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरी भीड़ जिस तरह जा रही है, हॉट टिप मिल रहा है, पान वाले से आपने टिप ले लिया, किसी और से पार्किंग अटेंडेंट से टिप ले लिया, उस टाइप की चीजें आपको नहीं करना है। सोच समझ के देख के निवेश करना, जहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड है, जहाँ पे अर्निंग्स आप देख रहे हैं, जहाँ पे आपको अर्निंग्स विजिबिलिटी, कई आईपीओज आ रहे हैं, तो वहां पे आपको देखना है कि अर्निंग्स पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड क्या, आगे चल के क्या लग रहा है कि अर्निंग स्टेबल है कि नहीं, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं। तो इस मैनेजमेंट की क्वालिटी, ये कुछ चीजें जो स्टैंडर्ड चीजें हैं वो दोबारा देखनी है। ये नहीं कि कई लोगों का ये लगता है जब मार्केट ऊपर जाती है कि जल्दी से क्विक बक बनाए, जल्दी से कुछ पैसा बना के निकल जाए, पर वो माइंडसेट से आप जाएंगे तो शायद आप धनी नहीं हो पाएंगे, निर्धनी हो जाएंगे। पर थोड़ा विश्लेषण करके अगर आप जाएंगे और छोटे छोटे अमाउंट रेगुलरली अगर आप निवेश करते हैं, बेशक वो डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, म्यूचुअल फंड या किसी और जरिए से करें, वो बेहतर रहेगा वनस्पत इसके कि आपने पूरा ही एक फॉर्चून वहां पे लगा दिया और एकदम से मार्केट नीचे गई तो घबरा गए। तो ये वाला काम नहीं करना है, क्योंकि हमें याद रखना है जो एफपीआई जिनके आंकड़ों के बारे में बताया, उन्होंने वो अरबों डॉलर लगाते हैं रिसर्च में, पैसे भी उनके पास है, उनके पास वो स्ट्रेंथ है जो एक छोटे निवेशक के पास होता नहीं। तो बेहतर ये है आप उनके सर्विसेज लें। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जहाँ पे जिनके इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं या पेंशन फंड्स हैं, तो उनसे लिए, उनके थ्रू करें तो बेहतर ये होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सपर्ट्स का फायदा मिल रहा है और वो भी कम खर्चे में हो रहा है। And the analysts, they are not expecting the flow to slow down in December due to festivals. Moreover, do you expect profit booking also to take place in the coming days by them? That's a very pertinent point, Rajesh. That is likely to happen because a lot of these countries have their year ending around that time, and there's also a lot of, as in our case, in our country, around the time Diwali happens, we generally try to ease up a little bit. So that is something which happens around Christmas in a lot of Western countries. So yes, that is something, and also the financial year is coming to an end. So that kind of profit booking one can expect. And there would be a little bit of tepidness in terms of economic activity, and people would come back after the Christmas break and into the new year and maybe get into action. Okay, on the PMI data front, which came in today, the business optimism faded slightly in November. Output growth is still predicted for the year ahead, but concerns about public policies, rupee depreciation and the pandemic has dampened the overall confidence according to this survey. What's your take on it? Yeah, Rajesh, what happens is depending on, it's around Diwali, middle of the month was Diwali, and there was a spike which some of us were fearing. That happened. So naturally there were lots of discussion that happened. So it is at that point that survey must have been undertaken. And that probably got reflected by some of the things that you're mentioning. But as we know that typically whenever there's a spike, it takes about 4 weeks to sort of settle down. So by the time you would hear about the findings of the survey, say in January, you'll find something much more sober and
possibly upbeat. So that change would typically happen because one has to give about 4 to 5 weeks for spikes to settle down. So we are going down. We're again pressing the curve, bending the curve in many places where spikes have happened. So when the survey again happens, you'll probably find that. But there could be other factors that could turn things the other way. आइए अब रुख करते हैं करेंसी बाजार का। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 38 पैसे मजबूत होकर 73 रुपये 67 पैसे प्रति डॉलर पर पहुंच गया। रुपये में मजबूती प्रमुख रूप से घरेलू शेयर बाजार में तेजी के बल पर आई। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 0.08% कम होकर 91.78 पर बना रहा। रुपये में हम तेजी देख रहे हैं। आपको लगता है कि रुपया ये 73-74 के रेंज में ही रहेगा और क्या ये लेवल हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इकोनॉमी के लिए हेल्दी है? देखिए, इससे बहुत ज्यादा अगर चला जाएगा तो दिक्कत आएगी। और जैसे कि हमें खबरें मिल रही थी कि काफी जबरदस्त नेगोशिएशंस हो रहे हैं, क्योंकि कई जगहों में दूसरे कुछ रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं, नेगोशिएट हो रहा है। तो बेहतर ये है, क्योंकि हम प्राइस में अगर हम नेगोशिएट करेंगे तो बेहतर है कि हमारा करेंसी हमारा साथ दे। तो बहुत ज्यादा अगर अप्रिशिएट कर जाएगा हमारे लिए दिक्कत रहेगी। तो बेहतर है कि इसी लेवल पे रहे जो कोविड के आउटब्रेक्स जब लॉकडाउन हुए थे मार्च में, उसी लेवल के आसपास अगर ये मंडराते रहे तो बहुत बुरा नहीं होगा मेरे हिसाब से। आइए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशियाई शेयर बाजारों में नए महीने की शुरुआत मजबूत रही। वैश्विक आर्थिक सुधार को कोविड-19 वैक्सीन से बढ़ावा मिलने की संभावना के बल पर बाजार में ये तेजी आई। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.8% की बढ़त में रहा। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.7% का उछाल आया और जापान का निकेई सूचकांक 1.3% की वृद्धि में रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 0.9% की बढ़त में रहा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.3% की वृद्धि दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां भी तेजी का रुख था। जर्मनी का डैक्स और फ्रांस का कैक दोनों 1% की वृद्धि पर थे और लंदन का फुटसी 2% के उछाल पर था। Wall Street's main indices fell yesterday as investors paused to invest in stocks ahead of crucial economic reports this week. The Dow Jones Industrial Average declined 0.9% and the S&P 500 fell 0.5%, while the Nasdaq Composite Index slipped 0.1%. Udayan, quickly, how do you see the Indian markets reacting to the coming of Joe Biden in power? Well, Rajesh, there's an expectation that there's going to be a stimulus package. Joe Biden and both the houses together. The moment the stimulus package is announced, it has to be announced, Rajesh, and you will see a positive impact on the market. Moving on, the oil prices today fell marginally as investors awaited direction from OPEC and its allies after the producers postponed a formal meeting to decide whether to lift output from January. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $47.80 per barrel, while WTI crude prices were around $45.20 per barrel. उधर 10 ग्राम सोने का मूल्य 750 रुपए से अधिक के उछाल में रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना 767 रुपए के उछाल से 48,559 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा पहुंचा। चांदी भी 1,528 रुपए की तेजी से 60,650 रुपए प्रति किलो हो गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना $1,807.70 प्रति आउंस पर और चांदी मंदी के साथ $23.50 प्रति आउंस पर थी। हालांकि आज हमने उछाल देखा है, लेकिन सोने के जो मूल्य हैं वो 4 वर्षों की वर्स्ट मंथली लॉस हुआ नवंबर में। आपको लगता है कि सोने का आकर्षण कम हो गया है एंड रिस्क ऑन है एटीट्यूड इन्वेस्टर्स? वो तो है कि जब इक्विटीज अच्छा करने लगती हैं तो बल्क ऑफ इन्वेस्टेबल मनी इक्विटीज की तरफ जाती हैं। पर अगर सोनू, इंटरेस्टिंगली ये है, अगर आप 10 साल की रिटर्न देखेंगे तो मुझे लगता है कि सोना, मतलब डिपेंड करता है कब लेते हैं, सोने का जो रिटर्न है वो इक्विटीज के बराबर है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस इंफॉर्मेशन के लिए और पूरे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए उदयन। Thank you, Dan, for being with us. And before we close, a reminder of the headlines. Equity benchmarks climbed more than 1%, supported by gains in realty, telecom, IT, and tech sector stocks.
Rupee strengthens 38 paise against the US dollar, and global indices log gains amid prospect of COVID-19 vaccine fueling global economic recovery. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.